2 minutes more to go. जल्दी से सबमिट कीजिए प्लीज। 2 मिनट बहुत होते हैं, 2 मिनट तो एवरेज टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है। सो प्लीज जल्दी से कीजिए। One minute to go. Quick, please. Thirty seconds more. Quiz submit कर दो जल्दी से। 30 seconds. 20 seconds. Last 10 seconds. Off. फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली 10 लोगों का क्विज सबमिशन आया है, तो आइडियली मेरे को ये क्लास नहीं कंडक्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। सो पॉलिसी इज अबाउट वल्नरेबल पेशेंट्स to ensure compliance of the prevailing laws and national and international guidelines on care of the patients who are vulnerable, that is elderly, children, physically or mentally challenged people. Objective of this is that policy and procedures are documented and are in accordance with the prevailing laws and the national and international guidelines. All patients admitted in these hospitals should be covered under this policy. The responsibility lies on ward, sister, in charge, nurse and nursing superintendent. Who are vulnerable patients? Any patients above 65 years of age and below 18 years of age. Unconscious patient, mentally challenged patient, physically challenged patient, bowel and bladder impaired patient, communication impaired patient, Braden scale less than 60 and Morse scale more than 25. I repeat, any patients above 65 and below 18, unconscious patient, mentally challenged patients, physically challenged patient, bowel and bladder impaired, communication impaired, Braden scale less than 60 and Morse scale more than 25. So the side rails protection should be ensured by the side rails of the bed are always placed upside in case of the vulnerable patients to prevent a fall, safe transportation or shifting of the patients from bed to stretcher, wheelchair and vice versa. The patient is accompanied by an appropriate and trained attendant for investigations, toilet and wherever necessary. Room and toilets without any locking system or bolt on doors to avoid patients fall getting locked inside. The floors are not slippery. These are kept dry to protect the patient from slipping or falling. The hospital has provided proper environment taking into account the vulnerable group of patients. This includes slopes and ramps with the railing
for the disabled in new building and newly renovated buildings, anti-skid treatment on ramps for the elderly patients, adequate training for the pediatric nursing staff for the care of the children. Safety belts are mainly used on stretchers and operation tables to prevent the client from falling. I will restart from the first slide. Policies to ensure compliance with prevailing laws and national and international guidelines on care of the vulnerable patients. The scope was the all patients admitted in the hospital. Responsibility lies on ward sister, in charge, nursing superintendent. Vulnerable group of patients who can't do the ideal activities of daily living. That is any patients above 65, unconscious patients, mentally challenged patients, physically challenged patient, bowel and bladder impaired patient, communication impaired patient, Braden scale less than 60, and Morse scale more than 25. The side rails of the bed are always placed upside in case of the vulnerable patient to prevent the fall. Safe transportation or shifting of the patient from bed to stretcher, wheelchair, and vice versa. The patient is accompanied by appropriate and trained attendant for the investigations, toilet, and wherever necessary. The room and toilets without any locking system and bolts on the floor doors to be avoided patients getting locked inside. The floors are not slippery. These are kept dry to protect the patient from slipping or falling. Hospital has provided proper environment taking into account the vulnerable group. This includes the slopes and ramps with railing of the disabled in the new building and newly renovated building, anti-skid treatment on ramps for the elderly patients, adequate training for the pediatric nurses staff for the care of the patients. Safety belts are mainly used on a stretcher and operation table to prevent the client from falling. To continuous observation of the general condition is first required. Vital signs of the patients are monitored round the clock. Frequent visits to the patient's room or bedside. Proper temperature, pulse, and respiratory Glasgow-Coma scale levels of the consciousness are maintained and monitored. General physical care, personal hygiene to be maintained, mouth or back care should be provided, skin care and proper position to prevent bad sores, diet and nutrition assist patient for the self-feeding, bowel and bladder care to be provided, medication and treatment are ordered by the doctors, and prevention of the infections. For patients on sedation, all protective measures should be taken as above. The light should be dim, no noise should be created and around the patient's room. Patient is observed by the duty nurse for any change of the condition in the vital signs and general condition. These are the policy. In practical, you have to take care of the vulnerable patients from all needs of their. As we discussed, group of the vulnerable patients, especially elder patients, require more attention. When you are admitting the elder patient, you have to check following things. When elderly patients are admitted or vulnerable patients is admitted, you have to label that patient as the vulnerable, putting at the appropriate identity tag, that is yellow tag. Generally, all patients should have ID bands which is of white color. The yellow color ID band to be labeled and placed on the patients who are vulnerable group of the patients. And after placing that on at the time of admission, every
precautions should be taken care of. When you are taking care of the vulnerable patients, you have to ensure that the room in which or bed on which patient is placed should be appropriate for the vulnerable group of the patients. For bed, the bed सर क्या हो गया, मीटिंग पूरी हो गई क्या? side rails are important. So once you place the side rail, मनोज आपका ड्यूटी कहाँ पे? मनोज आपका ड्यूटी कहाँ पे? अगर सब लोग सुन रहे हैं तो मैंने मनोज को रिमूव इसलिए किया है कि वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, और भी वजह है कि किसी ने, मैं मीटिंग ले रहा था और किसी ने मेरे को ही म्यूट कर दिया। अगर आपको क्लास नहीं करवानी है तो आप हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात कीजिए। क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करना है आपको, ठीक है? आप क्लास में मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ में कभी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहूँगा। आप क्लास में मत आइए अगर आपको क्लास में आकर के डिस्टर्बेंस करना है। हाँ, तो साइड रेल्स जहाँ तक बात है, हम बात कर रहे थे, तो जिस पेशेंट, वल्नरेबल पेशेंट को अगर आपने बेड पे लिटाया है तो साइड रेल्स रेज होनी चाहिए। मैंने हॉस्पिटल में राउंड करके देखा है कि बहुत सारे ऐसे बेड्स हैं जिसकी साइड रेल्स नहीं है। तो जिस बेड की साइड रेल्स नहीं है उस बेड पे स्पेशली वल्नरेबल पेशेंट को कभी नहीं रखना है। वल्नरेबल पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ उस बेड पे रखना है जिसमें साइड रेल्स है। जितने भी इंडिविजुअल रूम्स है या जनरल वार्ड्स है, स्पेशली जनरल वार्ड जिसमें मल्टीपल पेशेंट्स हैं, शेयर्ड वार्ड्स है, उसके अंदर जो बाथरूम्स है उसके अंदर ग्रैब बार्स होनी चाहिए। बाथरूम का अंदर से बोल्टिंग या लॉकिंग का सिस्टम नहीं होना चाहिए। कोई भी स्लिपिंग या स्किडिंग का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, गीलापन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है बाथरूम का, बेड का, और फर्श के ऊपर कोई गीलापन हो तो उस जगह से उस पेशेंट को नहीं गुजारें। और प्रॉपर साइन बोर्ड्स यूज़ करें स्लिपरी सरफेस के लिए। हर वार्ड में एक साइन बोर्ड ज़रूर होना चाहिए
वेट सरफेस और स्लिपरी सरफेस वाला, जिसकी वजह से आप उधर जो है साइन बोर्ड डिस्प्ले कर सकें, जिसके कारण आने जाने वाले लोग सावधान हो सकें। ठीक है। इसके अलावा आपको वल्नरेबल पेशेंट्स के लिए स्पेशली फॉल से रोकने के लिए जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ट्रॉली के ऊपर सेफ्टी बेल्ट है उसको यूज़ करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको अपने लेवल पे इंश्योर करनी है। अगर कोई भी पर्सन लेट आया है तो वो हैंड रेज कर सकता है ताकि मैं इन चीज़ों को वापस से रिपीट कर सकूं। इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको वापस मैं बता रहा हूँ, जो आपकी पॉलिसी का पार्ट है वो है side rails of the beds are always placed upside. Safe transportation of the patient from the bed to stretcher or wheelchair and vice versa. Patient is accompanied by the appropriate and trained attendant for the investigation, toilet and wherever necessary. The room and toilet without any locking system and bolts on the doors to avoid patients getting locked inside. The floors are not slippery. These are kept dry to protect the patient from slipping and falling. Hospital has provided proper environment taking into account the vulnerable group. This include slopes and ramps, railing, disabled patients for new building and renovated buildings, anti-skid treatment on ramps for the elderly patients, adequate training for the pediatric nursing staff for the care of the children. Safety belts are mainly used for the stretcher and operation table to prevent the clients from falling and as well as wheelchairs. ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड का। प्रोटेक्शन वाला जो पॉइंट्स है वो आपको इंश्योर करना है, और जो भी वल्नरेबल ग्रुप का पेशेंट है उसका आईडी बेंड है, येलो कलर का आईडी बेंड लगाना है। बाकी जनरल पेशेंट का जो आईडी बेंड है वो वाइट कलर का होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना। अभी मैं क्विज भेजता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके।